बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वर्बल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एएमसी और एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट में आते हैं और एक बाकायदा एक पोर्शन होता है जिसमें एएफएनएस का भी टेस्ट होता है। इसमें 30 मिनट्स के अंदर जो है वो 85 वर्बल एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होता है। सेम एएमसी के टेस्ट में भी 85 एमसीक्यूज़ होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। If 28th day of a month is Sunday, then the second day will be Tuesday. If yesterday was Sunday, then the day after tomorrow will be Wednesday. If 4th day of month is Friday, then 19th day will be Saturday. 90% of 90 is 81. 1/3 of 10% of 90 is 3. 1/3 of 10% of 120 is 4. There are 7 months in a year having 30 days. If 5 men write 5 papers in 5 minutes, then 1 man will write 1 paper in 5 minutes. Out of 500 students, 360 are boys. The percentage of girls will be 28%. 2 plus 2 by 2 is equal to 3. Quarter of 1/10 of 120 is 3. There are 30 passengers in a bus. 2 by 3 of them are men. Then the percentage of women is 33.33%. Ali bought a pen for Rs30 and sold it for Rs40. Profit will be 33.33%. Point out the difference from the following: angle, rectangle, square, hexagon. Angle is the answer और ये odd one out टाइप जो है वर्बल की उसमें से आते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। फुटबॉल इज द आंसर। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस। आंसर इज फुटबॉल। वीट, हे, राइस, बार्ले। हे इज द आंसर। मंकी, एप, चिंपैंजी, पैंडा, बबून। आंसर इज पैंडा। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। यूरो इज आंसर। If 4th day of month is Tuesday, then 26th day of month will be Wednesday. There are 30 passengers in a bus. 2 by 3 of them are men. Then the number of women are 10. A man walks toward north, then he turns left. After some time, he turns right. Then the present direction will be north. Complete the following series. सीरीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Okay. If 4th day of month is Sunday, then 19th day will be Monday. If 14th day of month is Sunday, then 4th day of the month will be Thursday. Choose the most appropriate answer from the option. Common sense का क्वेश्चन है। Parents give education to their children to groom them. We boil milk to kill germs. If yesterday was Friday, then the day after tomorrow will be Monday. A train speed is twice as that of car. If car covers 60 km in 1 hour, then how much distance train will cover in 30 minutes? यानी कार 1 आवर में अगर 60 किलोमीटर करती है तो ट्रेन 30 मिनट्स में 60 किलोमीटर कर लेगी कवर। Bat cannot see, snail cannot hear. Sound of eagle is scream. Half of 9 by 90 is 1 by 5 is 0.2. In a class of 1500 students, 1200 are present, then the percentage of absent students will be 20%. If my brother's sister is your mother, then who I am to you? Suppose that I am a man, ठीक है, तो this is answer is uncle, और अगर मैं women हूँ तो इसका मतलब है answer is aunt. If first day of month is Monday, then 12th day of the month will be Saturday. If 5 men write 5 pages in 5 minutes, then 1 man will be right. वही सेम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं 29, 30 और 31. You can take screenshot from this तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 80% of 90 is 72. In a classroom, out of 1500, 1200 are present. Find percent of present students. ये repeated question है तो repeated question बार बार लिखे हुए आ रहे हैं। If second day of the month is, then 12th day will be Friday. मैं कब पढ़ देती हूँ।
If second day of a month is Monday, then the 12th day will be Friday. If second day of month is Sunday, then 23rd day will be Sunday. 2 plus 2 multiplied by 2 is equal to 8. 1/3 of 120 is 40. If 1 dozen pencil price is 27, then price of 4 pencils is 9. Ali moves toward north side. After some time he turns left. Then again turn left with present direction to south. Out of 500 students, 340 are present. Percentage of absent will be 32%. Train is moving at speed of 90 km per hour. How much distance it will cover in 12 minutes? Answer is 18 km. A man covered 20 km in 1 hour and 40 minutes, then he will cover 1 km in 0.2 minutes. If 15th day of the month is Monday, then 4th day of the month is Thursday. In class of 24 students, 1 by 4 are male, then percentage of females 75%. आगे वही सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है, MCQ नंबर 46 जो है वो, और MCQ नंबर 47 जो है वो थर्ड लेटर व्हेन एक दिया गया है, वर्ड दिया गया है जिसको आपने करना है, अरेंज करना है एक मीनिंगफुल लेटर में, एक मीनिंगफुल वर्ड में, और फिर उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखना है. द लेटर व्हेन डैश 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 इज अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली विल बी E. Third letter when this word is arranged, then alphabetically it will be E. Aeroplane flies due to lift. It is not confirmed. Vehicle is to wheel as sound is to waves. Analogy related MCQs. Leap year comes after 4 years. Same आगे वही question. Train covers 120 km distance in 1 hour 40 minutes. How much distance it will cover in 15 minutes? Answer is 30 km. If yesterday was Friday, tomorrow will be Sunday. If 4th day of month is Sunday, then 14th day is Monday. The car is moving with 120 km per hour. How much distance is covered in 10 minutes? 120 multiplied by 840 multiplied by 7 is equal to 840. फिर आगे सेम क्वेश्चन हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इनको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ चुकी हूँ. सो ये थे 60 MCQs और ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 में इंशाल्लाह बाकी के 60 MCQs डिस्कस करेंगे. तो मेरे पास जो 120 MCQs हैं उनमें से 60 मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और 60 जो है वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.